Good morning, friends. Welcome to the SBI Securities Daily Morning Podcast. So, the US markets ended higher on both Friday and Monday. So, in these 2 days, Dow was up 1000 points while the Nasdaq was up 500 points. तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ एग्जाम्पशंस दिए हैं टैरिफ्स पे एंड इसके चलते यूएस मार्केट्स में रिकवरी देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को टेम्पररी रिलीफ दिया गया है, लेकिन ये प्रोडक्ट्स सेमीकंडक्टर्स एंड फार्मा के साथ अलग सेक्टरल टैरिफ में आएंगे, ऐसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने बताया है। तो ये रिलीफ टेम्पररी रहने वाला है। President Trump also said that some car companies could get help from the auto sector tariffs. So we saw car companies, listed stocks in the US recovering yesterday. The dollar index continues to be below 100, a 10-year yield at 4.35%. Asian markets आज फिर से ऊपर है, reacting to the positive global cues. गिफ्ट निफ्टी भी एक गैप अप ओपनिंग आज फिर से दिखा रहा है। इंडियन मार्केट्स 2 days ऑफ ग्लोबल क्यूज पे रिएक्ट करेगा, तो इसके चलते अराउंड 380 पॉइंट्स का गैप अप गिफ्ट निफ्टी इस समय इंडिकेट कर रहा है। इंडिया का सीपीआई डेटा आज ड्यू है, तो मार्केट्स उस पर भी फोकस करेगा। इन टर्म्स ऑफ की रिजल्ट्स टुडे, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, आईआरईडीए विल बी रिपोर्टिंग their numbers today. Coming to the stock specific news, so Orient Cement reported its Q4 numbers on Friday. The YOY numbers were weak, however, there was sequential improvement, so expect a neutral reaction today. Macrotech developers will be in focus as the Lodha brothers have settled the trademark dispute which was ongoing. So, positive relief for Macrotech developers. Sula Vineyards posted its Q4 update where its revenue has grown just 0.7% YOY. So, a weak set of update, expect a negative reaction on Sula Vineyards. Zydus Life Sciences, the company will acquire 85.6% of Amplitude Surgical SA France at a price of €6.25 per share. The company has also received a final nod from the US FDA for certain tablets. So positive overall for Zydus Life Sciences. Couple of order wins. So इरकॉन इंटरनेशनल को 128 करोड़ ऑर्डर मिला है फ्रॉम इंडियन रेलवेज। अशोका बिल्डकॉन L1 है 569 करोड़ ऑर्डर में फ्रॉम सेंट्रल रेलवेज। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को 397 करोड़ ऑर्डर मिला है फ्रॉम गोदरेज प्रॉपर्टीज़। टाटा पावर को एनटीपीसी से एक 200 मेगावाट का पावर प्लांट के लिए ऑर्डर मिला है। ट्रांसरेल लाइटिंग हैज सिक्योर्ड न्यू orders worth 1,085 crores in the domestic market. So expect all of these companies to react positively in today's trade. Godrej Industries, the chemical business, has announced a completion of an acquisition through which they will acquire a food additives business, and this will expand the company's product portfolio. So positive for Godrej Industries. GMR Power and Urban Infra, the company will be selling stakes in non-operating stressed assets to Synergy Group. This is part of a one-time settlement which they have agreed with the bankers, and this will reduce the debt by 4,400 crores and spin off the non-operational gas plants and stressed assets of the GMR Group. So positive for GMR Power and Urban Infra. So that's it from the Fundamental Podcast today. Thank you for listening. Have a happy trading session. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.